Hey you guys, what's up? I hope you all are doing great, and if you are new to this channel, well hi, my name is Antra and I'll be more than happy if you consider liking, sharing and subscribing to my channel given below, and welcome back to my channel. And I think you have read by the title already कि जो आज का वीडियो है वो क्या होने वाला है. So yeah, it is a फोटो शूट चैलेंज जिसमें मैंने आपको पोलिंग ऑप्शंस दिए थे इंस्टाग्राम में, और 24 आवर्स के बाद जो भी उसके, एक्चुअली इट इज़ नॉट 24, इट इज़ लाइक 20 और 21 आवर्स के बाद जो भी रिजल्ट्स आए थे, आई विल पुट दैम हियर, और उसके अकॉर्डिंग मैंने शूट किया है. लाइक आई विल बी शोइंग इट हियर. सो विदाउट ब्लैबरिंग अ लॉट, लेट्स straightly hop into the video. Also, I find some of the challenge really irritating because I have to hop into my storeroom and then धूप में भी जाना था, but let's see how the pictures comes out. Dressed up like so because I was shooting for a brand collaboration. If you aren't following me on Instagram, you can check it out, my reel over there. And yeah, I'm up for the next shoot. So for this I have kept the things really simple, a solid white shirt, और नीचे तो मैंने वही स्कर्ट ही वापस से उसी को पहन लिया है. And for this, the star of the show is a dupatta, as you guys polled for dupatta rather than curtain. So here it is, and that's why I have kept the things really minimal, क्योंकि ओवरऑल दिखना है तो दुपट्टा को ही है. सो या लेट्स गेट इनटू इट. दिस इज़ हाउ आई कैप द ट्राइपॉड. और ये जो है होल्डर को मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है जिससे जो एंगल है वो ऊपर की तरफ हो, तो स्काई कैप्चर हो साथ में. एंड आई एम गोइंग टू कीप माई फोन ओवर हियर एंड क्लिक. दिस दुपट्टा वाला शॉट इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट शॉट. इसमें यू हैव टू रेज योर हैंड लाइक सो, एज इफ आपने दुपट्टा लिया हुआ है, एंड देन होल्ड योर दुपट्टा, सेट द टाइमर, एंड बस इसको आपको हवा में इस तरीके से उड़ाना है. एंड क्लिक फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स एंड फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस लाइक सो. बेसिकली यू हैव टू क्लिक टू टाइप्स ऑफ पिक्चर, वन इन विच यू आर रेजिंग योर हैंड और दूसरा वो जिसमें दुपट्टा हो बस. दिस इज़ सो बिकॉज वी आर गोइंग टू एडिट दिस ऑल ऑन पिक्सआर्ट एंड द रिजल्ट लुक्स समथिंग लाइक दिस. एंड इट्स ट्यूटोरियल विल बी डेफिनेटली अप ऑन माई इंस्टाग्राम. जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे वो आ गया होगा, सो वॉच इट. सो गाइस, लेट मी शो यू. Okay. Up next is the railing wala shoot, and I was super excited for this one. I don't know why, because this is the shoot I have never done before, and this is, I feel, something creative and something different from the others flower chair wale shoot, because almost every YouTuber karte hi hai flowers chair wala, but this time it's insane. I really wanted to do this railing wala, so let's quickly get into the video. By the way, this is the outfit I'm wearing. This is the quad set from Triple S Street Style Store, and if you haven't watched my recent vlog yet, which is hitting a lot of views, so you must, because it is a haul video of this Street Style Store only. So let me show you the outfit. So these are the pants. I don't know, plazo or what, but I don't know, these are ill fitted by the way. And the matching top, मतलब मैं सच्ची इसको पहनती नहीं हूँ, मैं बहुत कम पहनती हूँ ये वाले बॉटम्स को बिकॉज ऑफ दिस फिटिंग, बट द टॉप इज़ क्वाइट वेल. एंड माई चोकर, इफ़ यू कैन सी, द बटरफ्लाई वंस आर फ्रॉम ग्रैब द बेस्ट. Instagram में I have uploaded its collaboration video to check it out. So yeah, this is the railing where I am going to keep my phone and shoot. Okay, so for this shoot I am going to set my timer on this phone and I'm going to keep it here. और उसके बाद मैं यहाँ पर खड़े होके बस शूट करूँगी. एंड इफ़ यू वांट थोड़ा सा टिल्ट चाहिए तो यू कैन लाइक keep it like so, but I am going to keep it like this.
फॉर दिस शूट कैमरे को मैंने लैंडस्केप करके रख लिया है एंड पोर्ट्रेट मोड लगा के टाइमर को जो है वो मैंने 10 पे सेट किया है बिकॉज इट विल टेक अ लॉट टू स्टैंड एंड पोज, दैट्स वाई 3 सेकेंड्स बहुत कम होंगे. Here I am just keeping my one hand on the railing and other hand behind my ears like so. And yeah, and if you don't want it on a landscape mode you can do it like this. इसमें आपको sky भी backdrop में मिलेगा तो it will be more vibrant. Place your phone like so. एंड या दिस इज़ अ परफेक्ट पोर्ट्रेट मोड. और अगर आप ऐसे क्लिक करेंगे तो यू विल बी एबल टू लाइक पोस्ट डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम. अदरवाइज दैट वन इज़ ऑल्सो कूल बट वन प्रॉब्लम इज़ योर फेस विल बी टिल्टेड इधर ऑन लेफ्ट और ऑन राइट बट बोथ आर रियली गुड. Okay, up next I'm going to fix my phone over here, and by this angle I'm going to capture it. What's up you guys, it's my second day. I wasn't feeling good the another day so I stopped filming and it was my period second day. As you can see some zits over here. What do you call it? Zits, pimple, acne? Let me know in the comment section. So I was feeling quite good today and so I did my little nude makeup sort of look, and let's see what I'm going to shoot next, and I'll also telling how I clicked it without using a tripod. So let's quickly see how it went. Like, by the way, can you see the clouds? This are looking so good now. I think this, by seeing the clouds, I have a feeling कि बहुत जल्दी बारिश होने वाली है. So yeah, without wasting any time, let's quickly hit it. Hey you guys, I'm back. I was a little disappointed from my that clothing. ये भी कुछ खास ठीक नहीं है, but still better than that. So let's quickly get into the video. Here I am creating a perfect backdrop जिसमें मैंने चेयर के ऊपर ऑलरेडी एक वाइट क्लॉथ लगा दिया हुआ है और बैकग्राउंड पीछे मैसी न दिखे इसीलिए द वाइट क्लॉथ अगेन. Okay, so पहले मैंने एक सेटअप किया था which I didn't like it, but I think this will work. Let's see. For this one I am going to keep this cloth कैमरे के लेंस के जस्ट सामने में but half covered and then I'll sit and click. No! God, please, no! 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 For my next shoot there is a polling option in between ugly location and good location, and guess what, you guys chose ugly location, and I was thinking ki ugly location hi hai because I have a lot of spaces which actually look ugly and I just wanted to make it creative, but then I wore another ugly dress. This outfit is not that good and I'm feeling like I'm looking like a Oh my God! This is my outfit. The top and bottom are different. Like this is the skirt and top cord set. So yeah, let's get into the storeroom, which is by the way super ugly, and I am
fucking scared of lizards. And look at my hair, I braided it. I took 10 to 15 minutes to braid और ये खुल गया अभी से. I don't know how this ugly location is going to look, because I thought of कि if there is ugly location I'll be wearing something very beautiful and pretty, but then I chose this outfit. So let's see. This is the ugly location, you guys. I am scared of the lizards. I swear I don't know I'm able to shoot it here or not. You can see the boxes and many more things, but इस पिक्चर को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए आई एम गोइंग टू ऐड वन एलिमेंट विच इज़ दिस फ्लावर्स. सो लेट्स सी हाउ इट लुक्स लाइक. So yeah, this was all for today. I hope you guys enjoyed watching, and if you do not forget to hit the bell icon and subscribe to my channel, so whenever I upload any new video you guys will be notified. And also all the editing tutorial will be uploaded on my Instagram, and जब तक ये वीडियो आ रही होगी तब तक I'll be editing it, और उसके बाद सारे editing tutorial आ जाएंगे. So make sure you are following, और Instagram का link description box में है, do check it out. Signing off, bye.